So how can I believe in you? Like, you don't seem to be an honest candidate. So why should I hire a dishonest candidate? Sir, I understand the industry standards, the industry needs. You Uh, understand industry needs, but you haven't studied Java. You said that Java is used by most of the companies, but then how can I believe that you understand the industry needs? मैं मैं क्या बोलूं। Hello Ankush, a very good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Okay, could you please tell me something about yourself? Yes, sir. Sir, my name is Ankush Avadia, and I'm from Narmadapuram, a small city situated on the bank of River Narmada. And I'm currently pursuing my BTech in CS from Technocrats Institute of Technology, Bhopal. And I got 81.50 percentile in my 10th standard, and I passed my 12th standard with 78.80 percentile. My hobbies are singing and Wikipedia editing, and I'm flexible to work, and I'm a critical thinker, and I believe in working smartly, uh, and I'm looking forward to work with Capgemini. Okay. Great, Ankush. Could you please tell me something about your family background? Yes, sir. Sir, I have one brother, one elder brother, and one elder sister, and uh, one grandfather and one grandmother. And my family background is that my father is a private employer in uh, gelatin factory, and my mother is a housekeeping. Okay. Please tell me something about your interpersonal skills. Like, apart from your technical skills, what all skills do you have? Sir, actually, as I also mentioned in my resume, that my preferred skills are um, I'm good in my time management skills, and I prefer the strategic work mostly. Okay, great. Um, Ankush, I just want to know about your city. Like, you belong to Bhopal, right? Yes, sir. Sir, actually, I And belong and to. you have done your Uh, college also from Bhopal. yes, sir. I'm currently Yes, pursuing. yes. Sir, actually, I'm from Okay, so Narmadapuram. you are pursuing it. Okay, okay. Yes, but So currently you I'm. might have visited college, quite several times. I just want you to tell any three, specialities of Bhopal. You might have explored Bhopal. So any three specialities of Bhopal? Yes, sir. Here, the most famous place is the Lake View. A beautiful scene can be seen here at the time of the winter season. And the second thing is the Bhojpur temple, the most prominent and the most precious temple is this. And third one is the Birla Mandir, which I visited just before 2 days. Okay, great, great, Ankush. Any popular food of Bhopal, maybe? Uh, Sorry, sir. okay, no issues. Ankush, you mentioned that technically you are good at C, C++, and Python. Yes, So, sir. who is the founder of C language? Dennis Ritchie and Brian Kernighan. Okay. What is a null pointer in C? Null pointer is a pointer which actually doesn't store any address of any variable. But in future we require any address, so we just fill null inside it. Okay, great. What is a static memory, Ankush? Static memory is just like if we declare any variable statically, so the space consumed by this particular variable or the pointer is static memory.
So what is the static variable which you have just mentioned? Static variables are the variables which are declared, which are actually pre-declared, and of which data type is fixed. Okay. Um, what are preprocessor directives in C? Pre-processor directives. Yes, sir. The header files which are included with hash include statements, and only these statements are read by the preprocessor, uh, and the code inside it are called as preprocessor directives. Okay. Um, very simple questions. SQRT function you might be knowing. What is the use of Yes, that function? just to find the square root of any number. To find the square root of any number. Okay. What is the return type and what is the input parameter of SQRT? Input parameter are double values, uh, and the two values which we do. The first parameter is the number of which we have to find the square root. It takes only single variable, which consists a double value, of which we have to find the square root, and its return type is also double value. Okay, great. And which preprocessor directive do we need to include to implement the SQRT function? Uh, uh, Sir, mat.h. Okay. Any other function which comes under math.h, any two or three functions which you can name? Sir, power function to calculate the power of any number, Okay, 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 and I just use this to. okay. Any three string functions which you are aware of? Sir, strlen to find the string length, and strcmp to compare two strings, and currently I am not able to recognize them. strcpy is used for what? Just to copy the string. Okay, and str Sorry, sir. str. Str. No, sir. Okay, forget about it. What is the difference between plus plus I and I plus plus? Sir, plus plus I is pre-increment, and I plus plus is post-increment. Plus plus I tells us that first we can increment the value of I, afterwards we can evaluate it, and I plus plus says that first of all we have to evaluate the value, we can use the value, afterwards we can increment it. Okay, out of arithmetic and relational operator, which has higher precedence? uh, Arithmetic answer. Arithmetic and relational operators. Arithmetic and relation operators. Sir, arithmetic operators. Okay, great, great. You also have idea about C++. So, what is the difference between classes and structures? Yes, sir. Um, Sir, structure and classes are similar, but structure is used to both. Classes are the collection of data members and member functions, whereas structure contains only data members of different types, and in structure is used in C language, and we use struct keyword to construct a structure in C, and to construct a class in C++, we use class keyword, and both include semicolon at its last. Yes. Okay. I want the definition of inline function. What are inline functions? Sorry, sir. Okay.
Um, I just want you to make a program where we have to find a maximum of three numbers. Okay, sir. I want the logic part of the program. Can I type in chat window, sir? No, no, no. I just want the logic. Suppose we have three variables A, B, and C. And I need to find Yes. out which is the maximum of A, B, and C. So how we are going to make a program for that? I just want the Yes. logic. Uh, Sir, it can easily be solved using Python. Can I use No, Python? I want the logic. You can, Okay, no, sir. you cannot use Python. We have a max function in Python. So Yes, what sir. is the use of this? Okay. Yeah. Sir, I will first store these variables inside a sequence, and afterwards I will iterate a for loop and just check two variables at a time. And at last, Mhm. Okay. What is inheritance and how many types of inheritance are there? is sir, inheritance is a oops concept. Uh, Inheritance is just a property in which a class inherits the properties and the functions of another class. And there are five types of inheritances are there. Okay. What are these? Some multiple inheritance and hybrid inheritance. So currently, I'm not able to recall it. Okay. What is multiple inheritance? Multiple inheritance is uh, when different classes acquire the properties of the same class, then it is called as a multiple inheritance. Okay. Great. Ankush, what are strongly typed and weakly typed languages? Yes, sir. Uh, so weakly typed languages are like the languages in which we are not bound by some special types of keywords. For example, identifiers like identifiers, we can use identifiers, and where some foundations are there. So in weakly type languages, there are less foundations. Uh, uh, for example, in Python, there is no use of semicolon, so it is weakly type language. And in C++, and Java, we have to use semicolon, so it is strongly typed language. Okay. So Python you are saying is a weakly typed language, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. What is the difference between mutable and immutable objects? Yes, sir. Sir, mutable objects allow us to change the values at runtime, whereas immutable objects doesn't allow us to change the value of any particular variable at runtime. Okay. And what is the difference between list and tuples in Python? Uh, just like we have arrays in C++, similarly we have list in Python, and lists are um, mutable, whereas tuples are immutable, that we cannot change the value inside a tuple. And we can create a list using square brackets in Python, and we can create a tuple using parentheses. But there is a special a special thing which we keep in mind, that we have to keep at least one of the commas inside the parentheses, so that Python can easily understand this is there we are we just want to create a tuple.
Okay. Ankush, you have not mentioned any, training and internships. Why so? Sir, actually, I haven't done yet. Why? Sir, uh, as we know, past 2 years were the COVID years, and actually, my father, my elder brother is also having his shop, so I have to go to shop and for the whole day, and it was a very critical situation. That's why I was not able to. So why don't you help your elder brother in the shop? And why do you want to join IT sector then? It's better option now to help him in his shop. No, sir, I am too much interested in software Okay, we industry. provide you work from suppose we provide you work from home and whole day you are busy with your brother's shop. No, So sir. for what should we pay you salary? No, sir. Actually, he understand the work of different types, so he will not interfere whenever I get job in any IT sector field. Okay, okay, great. Could you please tell me something about your project? Yes, sir. I did my project in car rental system in C language. Actually, this is a project having two login panels. First is admin login, and second one is employee login. Admin admin login panel is just for the owner of the organization who can just log in and can see the details of employees as well as the car rented car details. And in employee module, different employees can log in individually and can just see the rented car details and how many cars are left to be rented. That's all about the project. Okay. How many people have made the project, or was it a solo project made by you? Yes, sir. We were two people are there in this project, and I just created admin module here. Okay. One more thing I want to ask, Ankush, do you know which programming language is used in most of the IT companies for work? Sir, as sir, I believe Java because of some security provisions. But uh, I believe that maximum big projects are deal using Python. Okay, so no, the correct answer is most of the companies use Java for their work. But you, in your skills, you have mentioned that you are good at C, C++, and Python, but you have not mentioned anything about Java. Yes, sir. So could you please justify why you are not good at Java? Uh, Sir, my life's very first language was C language that I learned 6 months ago, and afterwards I go for Python. Uh, I didn't prefer Java because of some reasons that because uh, it is very easy to deal with Python, but my interest is for just Python. That's why, sir. Suppose we have a project where you have to work on Java, but you'll say it's not of my interest and it's very difficult. I love easy things. So, what is the Uh, point in hiring you? I don't find a point to hire you. Why should I hire you basically? Could you please tell me any of your strength or reasons why should I hire you? yes, sir. Sir, actually, uh, that will be a very wonderful opportunity for me to get interviewed in such a renowned company. So, Capgemini will surely prove to be an excellent platform for me to establish my skills and knowledge. Even though I'm a fresher, I assure you that I will give my best and work with my full potential. And Okay. Where do you see yourself 5 years from now, Ankush?
So I just want to see myself after 5 years solving bigger problems which actually exist with my expertise over there, and that's something which would make me happy. Okay. Okay. What are your weaknesses, Ankush? Any two of your weaknesses I want to know. Sir, sir, I believe my weakness as I keep on doing the same task for a long period of time. Either it can take my days and nights. I don't leave any problem. If I get stuck into a problem, I don't leave it until I get its preferred and exact solution. Uh, until it, if it can take uh, my, even it can take my days and nights, but I don't leave it. Okay. Uh, you said that once you start a work, you finish it, whether it takes a complete day or a night. You have Yes. mentioned that you are good at C++ plus plus in your resume. While studying C++, plus plus, you might have studied inheritance. I asked you the types of inheritance. You are not aware of that. So how can I believe in you? Like, you don't seem to be an honest candidate. So why should I hire a dishonest candidate? Sir, I understand the industry standards and industry needs, and I You uh, understand industry needs, but you haven't studied Java. You said that Java is used by most of the companies, but then how can I believe that you understand the industry needs? uh, so according to my skills and learning capabilities, I can learn whenever I get a project. I will learn, and I will just cover the whole concept as soon as possible. In India, Okay, any latest rewards or recognitions achieved by Capgemini? so I'm Okay. Um, you have mentioned in your hobbies that you love sorry, sir. playing cricket. Okay, suppose you are the owner of a IPL team. Okay, you have to make a selection of 11 players. 10 players are already selected. You have a vacancy of one player. Yes. Right now, you have two options. One is to choose an experienced candidate like MS Dhoni, who is not in form, or maybe Virat Kohli, who is currently not in form, but his experience will help your team a lot. Okay, on the contrary, the second choice is having a young Yes, sir. player who is superb at form. For example, Avesh Khan or maybe Rituraj Gaikwad, or Yes, sir. any new player who doesn't have much of experience but he is great in form. So whom would you select and why? So first No, of you all, are the expert. You as have all the right. No one is more I will expert than concern you. with my So what is expertise your also choice? I here. want to ask That's basically. to my coach also. Uh, Okay, why so? sir, I will choose the younger one. Sir, because as you already told, he's in a good form, and I believe that the youngsters have a good capability of doing very good. Uh, and the senior players are the seniors, but with passing with the time, Okay, uh, Ankush, why you choose computer science engineering and not other branches or maybe not other domains? Why do you want to join IT sector only? uh, sir, actually, in my 12th standard, when I was in 12th standard, uh, my college visited at my school, and uh, they just arranged a seminar, and here they told the importance of IT sector and the softwares, and here I learned about the languages that human can easily deal with the machines. From there, and from there I got uh, thinking to deal with the machines and to work.
with uh, with the machines Okay, Ankush, it was lovely and talking to do you. something Your result will be good in communicated this IT shortly. sector. Wish you all the best. ओके अंकुश, so this is the end of mock interview. अभी फीडबैक और डिस्कस करते हैं, Thank you, sir. बट आपके हिसाब से मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, लाइक वाज इट वर्थ इट और अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी? Yes. मॉक इंटरव्यू वर्थ इट था या ऐसा था कि यार वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है? Sorry, sir. नो सर, बिल्कुल नहीं। सर बस एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता ओके, है। और दूसरी चीज़ ये कि सर आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ यू एंड फेस टू फेस एक इंटरेक्शन था आपके साथ, तो और आप स्किल्ड हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फर्स्ट टाइम था फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई आई ओके वाज अंकुश, मैं हेजिटेटेड पहले एंड चाहता हूँ कि यार मैं तो नॉट फुल्ली फीडबैक दूंगा, पर पहले आप कॉन्फिडेंशियल। अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, लाइक इंटरव्यू के पहले आप कैसा फील कर रहे थे, इंटरव्यू में क्या फीलिंग्स, क्या चीजें मन में चल रही थी, क्या थॉट्स चल रहे थे, और इंटरव्यू के बाद लाइक कैसे थॉट्स आ रहे थे, क्या चल रहा था? सर इंटरव्यू के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फील कर रहा था और मैंने कई सारी चीज़ें जो रिवाइज करी थी, बहुत सारे कंसेप्ट। एचआर इंटरव्यू आपके आपने जो क्लासेस ली हैं एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो मैंने पूरी वीडियोस देख भी ली, पीपीटीज भी पढ़ ली और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन भी की। कंपनी के बारे में भी निकाला था कई इंफॉर्मेशन और नोट्स भी बनाए थे। बट इंस्टेंटली मतलब इंटरव्यू के टाइम पर मतलब वो चीज़ें जो है इंस्टेंटली याद नहीं आ पाती हैं, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पे मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और इंटरव्यू के बाद बस सर मैं अपने आप को ये चलिए, फीडबैक देना अब एक चाहूँगा एक कि करके मैं काफ़ी डिस्कस ज़्यादा करता वीक हूँ। था, ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको अपना वीक रेज्यूमे पॉइंट्स पूरा जो थे चेंज सर। करना है, ए टू जेड पूरा। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, मे बी आपको बुरा लगे, बट वो आपको इम्प्रूव करने यस। में हेल्प करेगा। अभी मैं आपको अच्छी अच्छी फीलिंग दिला दूंगा, आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा ना। ओके सर। इससे अच्छा अभी थोड़ी सी कड़वी दवाइयां खा लो, ताकि एक्चुअल इंटरव्यू यस। में दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका रेज्यूमे ऐसा लग रहा था कि किसी 5th या 6th क्लास के बच्चे ने यस सर। रेज्यूम बनाया। इट शुड बी फॉर्मल, आपने बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर रखा है। ठीक है, ओके सर। दूसरा चीज कॉलेज का आइकन होना चाहिए, आपके रेज्यूमे में वो नहीं है। तीसरा, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कर रखी है भाई, लेकिन आपने परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखे कि कितने परसेंटेज आपने यार मतलब किया हुआ है। उसके बाद यू नो आपने स्किल्स में लिखा है इंग्लिश यस। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक वर्क। ये स्किल नहीं होती, ये आपकी सॉफ्ट स्किल है बेसिकली। पहले आपके एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आई जस्ट नीड वन थिंग कि टेक्निकली आपको क्या आता है। उसके बाद मैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे जाऊंगा ना। तो सीक्वेंस ही गड़बड़ आ गया, सबसे पहले आपने एजुकेशन लिखी, फिर सॉफ्ट स्किल्स लिख दी, पहले टेक्निकल स्किल्स लिखना है ना आप। उसके बाद आपने बिल्कुल बॉटम में लिख रखी टेक्निकल स्किल और प्रोजेक्ट, जबकि वो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी स्किल, इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह ये ओके सब सर। बाद में आ जाती है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ये तो हो गया रेज्यूमे की बात। रेज्यूमे में लास्ट में ना ओके डिक्लेरेशन भी सर। लिखना होता है कि मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो करेक्ट है, और आपका नाम और सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, आप रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स देख लेना, मेरा प्लेसमेंट हुआ के अंदर है ना। तो उसमें रेज्यूमे जो है वो पूरा आप देख के। हाँ हाँ। मैंने सर हम्म सर एक्चुअली मैंने रेज्यूमे जब सबमिट हम्म। किया था, मॉक इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया था मैंने। तो इसके बाद मैंने वो हाँ वीडियोस हाँ, देखी थी दिखाइए, रेज्यूमे बिल्कुल प्रिपरेशन दिखाइए। की। तो सर मैंने एक रेज्यूमे प्रिपेयर किया हूँ, क्या मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकती हूँ? ओके ग्रेट। तो रेज्यूमे में क्या क्या ओके सर। इम्प्रूवमेंट है वो आपको क्लियर हो गए हैं। ओके ठीक है, सर। अभी जल्दी से इंटरव्यू ओके। पर आ जाते हैं यार। ओके सर। सबसे पहली बात तो आपको अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ओके इम्प्रूव सर। करना है भाई, आपने बिल्कुल भी अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। प्लस सेकेंडली थ्रू आउट द इंटरव्यू आप
लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे या ऊपर देख रहे थे, वन ऑन वन आई कांटेक्ट नहीं था। ये बहुत जरूरी है आई कांटेक्ट होना, ठीक है। आपको भी पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे ऊपर देख रहे थे या तो साइड में देख रहे थे, आई कांटेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वो चीटिंग में काउंट हो जाता है। प्लस थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी पे वर्क करो, 1 महीने के लिए वाईफाई लगवा लो यार, 600 रुपए का होता है, बट आपके करियर का सवाल है। तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि वीक है, आप पूरे टाइम ब्लर्ड दिख रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आपके आंसर्स में क्लैरिटी नहीं थी बच्चे, मतलब लाइक आंसर्स शुड बी क्लियर। आपको खुद ही मैं बोलूंगा ना, आप अपने आंसर को रिपीट कर दो, इस बार आपको दूसरा आंसर बता, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट। आपके आंसर्स में वो क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, क्या है क्या नहीं है। प्लस थ्रू आउट बैकग्राउंड नॉइज, कुछ मोबाइल के नोटिफिकेशंस बज रहे हैं या कुछ तो है यार, दिस इज नॉट अ गुड साइन, है ना। तो जब भी आप एक्चुअल इंटरव्यू करो, अपने अपने फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जस्ट आधे घंटे की बात है, प्लीज अपने सब लोग मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है। या तो गेट वेट लगा के देना इंटरव्यू। उसके बाद ना आपका व्हाट्सएप भी, आई थिंक आपका व्हाट्सएप डेस्कटॉप खुला हुआ है, मे बी लैपटॉप में, है ना। तो उसके बैक टू बैक टप टप नोटिफिकेशंस, है ना, तो उसको बंद कर देना। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग द इंटरव्यू। आप जहाँ पे अपना आंसर खत्म करते हो ना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस में खत्म किया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में पूछ लिया। तो आपको अपने आंसर्स इस तरीके से देना है कि उसमें कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी ना आए कि अगर जिस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आंसर ना कर पाऊँ। आपने 2 इनहेरिटेंस बता दिए, फिर बोल दिए कि मुझे नॉलेज नहीं है आगे, तो मैंने उन 2 इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया। इससे अच्छा तो आप पहले ही बोल देते कि सर मुझे नहीं आता, कम से कम फिर मैं पूछता नहीं ना, है ना। उसके अलावा ये शॉप वाली बात आपके मुंह से पहली और आखिरी बार निकल रही है। आपके ब्रदर की कोई शॉप नहीं है, इस बात को समझो। अगर आपकी फैमिली में एक शॉप होती है, इसका मतलब बंदे के पास एक सॉलिड बैकअप है, कल के दिन हमारी कंपनी पे लात मार के निकल जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे और करते नहीं है, रियलिटी। इसलिए इंट्रोडक्शन में आपका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, कहीं घर पे शॉप तो नहीं है, कहीं पिताजी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है। भाई जब आपके पास कोई बैकअप नहीं होगा तो आप जानबूझ के करोगे ना हमारी कंपनी में काम, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट का कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होता है। तो कोई भी पूछे क्या है भाई, बोल देना मेरा भाई जो है वो पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, वॉट एवर इट इज। मत बोलो उसका बिजनेस है, बोलना ही नहीं है ये, है ना, कि मैं अपने भाई की शॉप में हेल्प, भाई आप आईटी की तैयारी कर रहे हो या भाई को शॉप में हेल्प करा रहे हो, तो ये लाइन कभी 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 भी नहीं बोलना, ठीक है। प्लस थोड़ा सा लाउड बोलेंगे हम, थोड़ा सा मतलब एक एनर्जी दिखनी चाहिए ना यार। एक 20-21-22 साल के लड़के में जो एनर्जी होती है, गर्म खून होता है हमारा, वो दिखना चाहिए। मेरे में और आप में डिफरेंस समझ आ रहा था क्या आपको? सिलेक्शन आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो इंटरव्यूअर की जो एनर्जी है ना, उससे 10% ज्यादा एनर्जी हमको देनी है। सिर्फ टेक्निकली हम अच्छे नहीं हैं इसकी वजह से ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनकी टेक्निकल स्किल्स बेकार है, लेकिन फिर भी आज 3-3 4-4 कंपनी फोड़ के बैठे हैं। क्यों भाई? अगर इंटरव्यू में सिर्फ टेक्निकल स्किल ही चेक करनी होती तो कैपजेमिनी तो राउंड 1 में सब ले रहा है ना, टेक्निकल पूछ रहा है ना, फिर इंटरव्यू क्यों करा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो वो जानना है। अब आप ऐसे बैठे हो छुई मुई कली की तरह, ओके सर, ये सर, वो सर, तो क्यों लेंगे यार वो आपको? They need energetic people and there are a lot of energetic people जो उनको थ्रू आउट द इंटरव्यू मिलने वाले हैं। तो आप उनको क्यों एक और रीजन दे रहे हो अपने आप को रिजेक्ट कराने का? आपको रिजेक्शन का रीजन मिनिमम रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एनर्जी वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज नहीं भी आता है कोई बात नहीं यार, कॉन्फिडेंस तो फ्री में मिलता है ना यार, उसको रखो बना करके। प्लस आपके आंसर्स यार थोड़े से क्लियर रखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। इवन एचआर क्वेश्चंस में भी आई वाज नॉट नोइंग कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं हो रही थी। क्लैरिटी इन स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस लॉन्ग आंसर्स दो। आपके आंसर्स में मुझे ही बार बार क्वेश्चन पूछना पड़ रहा था, मुझे ही वो एफर्ट लेना पड़ रहा था। प्रोजेक्ट है, मुझे पूछना पड़ा कितने लोगों ने बनाया, मुझे पूछना पड़ा आपका क्या रोल है। वीकनेसेस भी बताओ तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो गिव लॉन्ग आंसर्स सो दैट कि आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाए। जितने लंबे आंसर्स दोगे ना, उतने कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि इंटरव्यू की ड्यूरेशन फिक्स होती है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोल रहे हो, इंटरव्यू को जब जब बोलने का मौका दोगे वो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। अब तुम छोटे छोटे आंसर दे रहे हो, मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, Yes, तुम sir. आंसर नहीं कर पा रहे हो, सब बेकार हो जा रहा है। तो इससे अच्छा बेटर है क्लियर लॉन्ग आंसर्स। तो यार कितनी बेसिक चीजें आप बताओ, मैंने कोई भी ऐसी चीज पूछी जो अनएक्सपेक्टेड थी? नल पॉइंटर, सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा इनहेरिटेंस, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर, क्लासेस, क्या ये फर्स्ट ईयर के बच्चे को पढ़ाई जाती हैं यार? ये बेसिक चीजें भी अगर हमको नहीं Yes, sir. क्लियर हैं तो फिर हम कैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे बताओ? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के होते तो समझ भी आ जाता, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के हो, है ना? तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर वर्क करना है, ठीक है? आपको मुझसे कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी मिली ना? थोड़ा सा मैं रूड था, आई नो, बट आपके बेटरमेंट के लिए है। ये सब चीजें आपके दिमाग में Okay, sir. एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, है ना? और जितनी अच्छी टेक्निकल स्किल्स होंगी ना, Yes. अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। No, 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 दोनों sir. चीजें इंटर रिलेटेड है, Yes. ठीक है? अच्छा, आपको कुछ पूछना है तो जल्दी Yes, से sir. पूछ लीजिए, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप Yes. करते हैं। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।